this session is being recorded, and this is Sir Rahman, your English language instructor. बेटा सबसे पहली चीज आपके पास देखिए कुछ वर्ड्स आ रहे हैं और इन वर्ड्स को आपको प्रोनाउंस करना है। कल रात के सेशन में हमारे पास ये रह गए थे और एक एडवाइस कर रहा हूं, डोंट मेक योर ओन प्रोनाउंसिएशन, अपने तलफ्फुज मत बनाए। भले से वर्ड जितना भी आसान हो, जितना भी पुराना हो, जितनी दफा आपने उसको बोला हो, देखा हो, सुना हो सकता है फिर भी आप गलत हो। आज आपकी ये बात मैं सच कर दूंगा कि हो सकता है कि आप गलत हो। यस, पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है? हाथ उठाकर अलीजा बताइए। अलीजा बताइए पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है? सर एप्रिशिएट। और दूसरा वर्ड? एप्रिसिएशन। पहला वर्ड रिपीट करें। एप्रिशिएट। हाँ, सॉरी सर। वर्ड? एप्रिसिएशन। यस, अतिया। यस सर। पहला और दूसरा वर्ड पढ़िए। एप्रिशिएट, एप्रिसिएशन। कुछ तब्दीली आ रही है, कुछ मुख्तलिफ लग रहा है। अच्छा अच्छा, और अक्सा? appreciate, appreciation, एप्रिशिएट, appreciation, अच्छा देखिए, अगर पहला वर्ड एप्रिशिएट आपने बोल दिया है तो दूसरा वर्ड भी एप्रिशिएशन होना चाहिए ना। और अगर दूसरा वर्ड एप्रिसिएशन है तो फिर ऊपर वाला वर्ड एप्रिसिएट होना चाहिए। yes sir, लेकिन हम बोलते हैं अप्रिशिएट। आई अप्रिशिएट यू, दिस इज द राइट प्रोनाउंसिएशन, आई अप्रिशिएट यू। बट जब आप एप्रिसिएशन बोलते हैं तो वाहे आप इसको चेंज कर देते हैं एप्री, not, जबकि ये है एप्रिशिएशन, नॉट एप्रिसिएशन। नो सा साउंड इज देयर, शा साउंड इज देयर, एप्रिशिएशन। अब एक वर्ड है जो जिंदगी में कभी नहीं देखा, आज पहली मर्तबा सामने आया, लेकिन हम पढ़ सकते हैं उसको। कैसे पढ़ेंगे? फिजा, लाइबा, लाइका, फातिमा। एक नया वर्ड आया है जिसको हम पढ़ सकते हैं हम, और उस वर्ड को हम कैसे पढ़ेंगे? BIDET। बनाओ अपना तलफ्फुज। bit, बिट, बिडे, बीडे, और yeah, bidet, yeah, ऐसे आया, और bidet, बिडे, बिडे, लोटा। लेकिन इसको बहुत सारे लोग गलत पढ़ते हैं, बिडे। अगला वर्ड पढ़िए। teacher, क्रीचर, creature, क्रीचर, ये creature, not creature, creature. Next, theory, 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 not theory, 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 theory. Next, debris, 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 debris. अगर मैं कहूँ debris, पढ़ेंगे debris, लेकिन लिखा हुआ क्या है? debris. So debris, debris of World Trade Center.
डेब्री ऑफ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, मलबे को कहते हैं, जो मलबा होता है ना, दैट्स कॉल्ड डेब्री. Elite, not elite. Most of the people pronounce it elite, elite class. She belongs to elite class, आला खानदान से, ऊंचे खानदान से, elite. Next, अब पढ़िए, इसको क्या पढ़ेंगे आप? Extraordinary. Extraordinary. extraordinary, 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 extraordinary. Extraordinary. नेक्स्ट, अब इसको पढ़े, ये जितना कॉमन लिखा हुआ है, कितने कॉमनली हम इसको प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन क्या प्रोनाउंस करेंगे? Forget. forget, फॉरगेट. इसको पढ़ते हैं forget, 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 forgot, 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 forgotten, forget, forgot, forgot, Forget. Forgot. forget, Forgotten. forgot, forgot, forget, forgot, forgotten, forget, 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 forgot, forgotten. forgot. Next, I have learned my lesson. Learn my lesson. I have learned my lesson. I have learned my lesson. इसमें कोई, इसमें कोई, अब यही देखिएगा, यही वाला वर्ड जब बनेगा क्या, Learning. जब ये एडजेक्टिव बन जाएगा, Learned, learned, जब एडजेक्टिव बन गया तो अब ये क्या पढ़ा जाएगा? I am Learning. learned. Learn it. Learn it. Are you learn it? Yes sir, alhamdulillah. Yes. आज के बाद तो कम से कम मैं कह, आप लोग कह सकते हैं, I am learn it. I am learn it. Are you learn it? Yes sir, alhamdulillah, I've learned it. That's very good. अच्छा, अब देखिए कि एक वर्ड जो था, जब वो वर्ड था तो उसका प्रोनाउंसिएशन कुछ और था, और जब उसका प्रोनाउंसिएशन, जब उसका वर्ड फैमिली चेंज हुई तो उसका प्रोनाउंसिएशन कुछ और हो गया. जैसे ऊपर वर्ब था आई हैव लर्न, नीचे एडजेक्टिव बना आई हैव लर्न इट, आई एम लर्न इट. Learn it. पायस, पायस, I, Hi. पायस. Hi. अच्छा, अब इसमें क्या मसला है? देखिए, Hi. कभी भी हम अपने तलफ्फुज नहीं बना सकते. मैंने पायस का जो ऑपोजिट था वो इम्पायस बना दिया था, लेकिन बाद में पता चला कि इम्पायस नहीं है. क्या है ये? इम्पियस. Impious. Impious, not pious, not impious. 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 impure, इसी तरह से जील, जील हमें पता था, लेकिन जील से जब हमने इसका एक और निकाला, जील एडजेक्टिव निकाला, पुरजोश, jealous, Z- तो इसको हमने पढ़ा जीलियस, लेकिन Zeal. बाद में पता लगा कि क्या निकला? जेलस. jealous, जेलस. सर ऊपर वाला जीव है. जील, जील से जेलस, Zeal. जोश, जेलस पुरजोश, एडजेक्टिव बन जाएगा जेलस. आर यू जेलस? नो सर, आई एम नॉट.
zebra, अच्छा, उसके बाद आगे चलिए। CUT, 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 BUT, cut, Good. CUT cut, BUT but, but CUT but, put put, put नहीं बेटा, CUT cut, BUT but, CUT put PUT। put Put. बुरा ये कहता है, मतलब एक लोकल स्पीकर ये कहता है अगर CUT कट है, BUT बट है तो PUT बट है, और अगर आपने कहा PUT पुट है तो फिर BUT पुट, CUT पुट। अब सवाल ये उठता है बच्चे का, सर ये क्या मसला है? सवाल है उसका, मसला क्या है, अभी हम हल करेंगे। आइए, अब ऊपर देखिए जो वर्ड्स लिखे, आप इसको एज इट इज प्रोनाउंस कर देते हैं। मोनोपोली, मोनोपोली, मोनोटोनस, फोनोलॉजी। स्पेलिंग याद करने के लिए याद कर सकते हैं, मोनोपोली, मोनोटोनस, फोनोलॉजी। लेकिन पढ़ेंगे कैसे? मोनोपोली, मोनोटोनस, फोनोलॉजी एंड फोटोग्राफर, नॉट फोटोग्राफर। अब पप्पू जा देख कर आओ, फोटोग्राफर अब तक नहीं आया, फोटोग्राफर नो, फोटोग्राफर, फोटोग्राफर। Phonology. Phonology is what? A study of sounds. Monotonous means boring. Class was monotonous. Monopoly. Question. Question. Pizza. Pizza. आगे देखिए, suggest. Suggest से आगे बढ़िए। suggestion suggestion, Suggest. suggestion Suggestion. Suggest. suggestion Suggestion. Tom and Jerry. Tom and Jerry, ये सही है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन वहां जो suggestion, suggestion, suggest से suggestion, Tom and Jerry। लेकिन अब आप देखिए अगला, monotonous, tube of Qaid-e-Azam, tube of Qaid-e-Azam। Tom and Jerry सही है, कोई मसला नहीं, लेकिन tube of Qaid-e-Azam, इसी तरह से कॉम, इसी तरह से बॉम्ब। wow, डोंट मेक योर ओन प्रोनाउंसिएशन। आपको एक बहुत छोटे छोटे मैंने अल्फाज आपके सामने रखे और आपने ये देखा कि किस तरह से हमारे प्रोनाउंसिएशन खराब है। सर जी अगेन रिवाइज करिएगा कॉम बॉम्ब, बॉम्ब, कॉम सब सब मोनोपोली के नीचे वाला जरा बोलिएगा, मोनोपोली, मोनोटोनस, फिनोलॉजी, monotonous, मोनोटोनस। Sir, please pronounce third word. बस यही आपकी ख्वाहिशात पूरी करेगा आज के बाद। bidet, आपने जैसे ही अपने मोबाइल में गूगल को खोलना है, अब आप देखिए आपकी स्क्रीन चेंज हो गई, यस ठीक है ना? अब आपने सिर्फ ये वर्ड लिखा, जैसे आपने लिखा Monotonous. Monotonous. monotonous, Not no. Monotonous. ये आपको 100 दफा बोल के दिखाएगा और पैसे भी नहीं लेता, ठीक है ना? monotonous, बड़ा अच्छा इंसान, हम तो पैसे लेते ना। अच्छा, अब इस तरह से फोनोलॉजी, monotonous, देखिए, फोनोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ साउंड्स। फोनोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ साउंड। सो असल में पूरी एक ब्रांच है स्टडी, इसका अगर हम डांस, Phonology, अच्छा इस पे ये देखें, स्लो भी है, phonology, 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 ब्रिटिश एक्सेंट, phonology, phonology, फोटोग्राफर, photographer, सॉरी, photographer, 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 photographer,
ये ब्रिटिश इंग्लिश है, अमेरिकन। Robot. photographer, photographer, अच्छा जी, अब ये तो एक तरीका आपको मैंने बता दिया। कभी भी कोई नया वर्ड आए ना बेटा, यू डोंट हैव टू मेक योर ओन प्रोनाउंसिएशन। आपको हमेशा नए वर्ड्स को गूगल करना है। सो कोई शॉर्टेस्ट वे ऑफ इंप्रूविंग प्रोनाउंसिएशन, कोई आसान तरीका, आसान बिल्कुल है। 2 घंटे के अंदर आप अपने प्रोनाउंसिएशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं अगर आप इन 3000 कीवर्ड्स को सुन ले, जो कि मुझे पता है आप लोग नहीं सुनेंगे, लेकिन जिसने सुन लिए ये 3000 वर्ड्स विद, इसमें सिर्फ प्रोनाउंसिएशन को आपको फोकस करना है कि किस तरह से हर वर्ड को पढ़ रहा है। ठीक है ना? सुनिए, road, ये 3000 वर्ड्स है। कितनी देर चलेगी ये? 2 घंटे, 1 घंटा 50 मिनट। यार क्या 1 घंटा आप मेरे लिए नहीं निकाल सकते और 1 घंटा किसी और खास इंसान के लिए? तो आपका मसला हल हो जाएगा, है बेटा? broadly, देखिए, broken, brother, brown, brush, bubble, budget, build, building, bullet, bunch, burn, burnt, burnt, bang, butt, bush, business, businessman, busy, but, butter, button, buy, buyer, buy, buy, having, cable, cake, calculate, ये दिस इज द फर्स्ट वे ऑफ इम्प्रूविंग योर प्रोनाउंसिएशन। ये सबसे पहला तरीका है। ईमानदारी के साथ हाथ उठाकर बताइए कितने लोग इसको आसान मान रहे हैं। तो 2 घंटे की बात है, हम ये 2 घंटे में सुन लेंगे। अच्छा, इसकी पीडीएफ भी मैंने आपके नोट्स में दी हुई है, जो फाउंडेशन लेवल के नोट्स है ना, उसमें इसकी पीडीएफ भी है। आप उस पीडीएफ के अंदर इन वर्ड्स को देख सकते हैं और साथ साथ में जहां आप गलती करें उस वर्ड को हाईलाइट कर लें, टिक कर लें, अपने पास अलग से लिख लीजिए। फिर आप देखिए कि आप विद इन 2 आवर्स आपको पता चल जाएगा यार ये मेरी 300 वर्ड्स है जो मेरे गलत मैंने बोले थे, और फिर उन वर्ड्स को दोबारा सुनिए। ठीक है ना? आप, दिस इज द इजीएस्ट एंड द फास्टेस्ट वे ऑफ इम्प्रूविंग pronunciations, and these are the 3000 most common words spoken by native speakers. अब आप चाह रहे हैं कि नहीं सर मैं बाकायदा एक ऑथेंटिक तरीके से चलूं, आइए मैं अब आपको एक और रास्ते से, जो बिल्कुल ऑथेंटिक रास्ता है, मैं उधर से लेकर चलता हूँ। ये तो मैंने एक शॉर्टकट दे दिया था आपको, ठीक है? अब मैंने लिखा IBS साउंड्स। अब आपको सिर्फ 3 मिनट की वीडियो है, remain with purpose, सिर्फ 3 मिनट की वीडियो है। 3 मिनट दूंगा आपके, और देखिए 3 मिनट में अब आपके साथ क्या होने वाला है, सुनिएगा। ये जो आपको ऊपर नजर आ रहे होंगे 2 डबल डॉट्स, ये लॉन्ग साउंड को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ई, फिर उसके आगे ई, फिर ऊ, और उसके बाद ऊ। देखिए किस तरह से पढ़ रहा है, सिखा दिया मैंने इसको, आपको भी ये सिखाएगा। read, eat, ई, sit, सिट, book, ऊ, book, बुक, ooh, ऊ, to, चू, here, हियर, here, हियर, a, day, f,
Man. America. Word. Oh. Sword. Poor. Tour. Boy. Boy. Oh. Go. Act. Tack. But. Hard. Oh. Not. Air. Where. I. My. Ow. Ow. Pick. Bed. Time. Do. Church. Judge. अच्छा बेटा, these are the individual sounds. ये सर आपको क्या दिखा रहे हैं आपके स्क्रीन पर जो आ रही है इस वक्त? These are IPA, International Phonetic Alphabets, and these are 44 symbols, and these 44 symbols have basic 44 sounds. क्या आप इसको कम से कम 3 से 5 मरतबा सुन लेंगे? अगर आपने ऐसा किया तो आप यकीन करें, जब कोई गोरा बोलता है तो उसके वर्ड की साउंड्स जो होती है ना, वो किस तरह से प्रोड्यूस होती है वो ये। जब हम बच्चे को सिबारा पढ़ाते हैं ना, तो उसे पहले कायदा पढ़ाते हैं ताकि उसकी बुनियाद अच्छी हो। तो ये बेटा वही चीज है, बस 3 to 5 टाइम्स, नॉट मोर देन दिस। और आज ही सुन लीजिएगा, राइट? तो उसके बाद आएगी आपकी दूसरी टीचर आ रही है, खूबसूरत। अभी जो 44 सिंबल्स मैंने आपको दिखाए हैं, ये वही 44 सिंबल्स किस तरह से आपको पढ़ा रही है, जरा देखिए। Hi, I'm Yvette, a facilitator at the Rollins Center for Language and Literacy. You probably already know the English language has very distinct sounds, or phonemes, that we combine in different ways to make words. In this video, we are going to demonstrate how to pronounce each of the individual phonemes. Often, we accidentally add an extra or schwa sound to the end of consonants. If students hear this and imitate it, it may then be reflected in later reading and writing tasks. To prevent this, it is important to produce only the phoneme itself without any additional sounds. An example of this is the sound P. Sometimes when teachers are trying to emphasize or isolate a phoneme, they say P. Instead, focus on producing just the phoneme itself. We'll start with the consonant phonemes. You'll see the associated letter or letter combination, also known as a grapheme, on the screen as I say the sound. Ready? Here we go. B as in banana. D as in dinosaur. As in fish. G as in guitar. As in hand. J as in jelly. K as in car. U as in leaf. As in Monday. As in nail. As in the end of the word sing. As in pumpkin. As in rain. As in sun. As in the middle of treasure. As in turtle. As in volcano. As in watch. As in yo-yo. As in zip. Some graphemes, such as Q and X, are composed of two phonemes.
For example, Q makes the sound and X makes the sound. The next phonemes are considered to be digraphs, where two letters make one sound. Ch, as in child. Sh, as in shoes. As in the middle of mother. As in third. Make sure students hear you pronounce phonemes correctly. You're modeling the language that they need to independently decode and write words. Just like the consonants, the English language has a wide variety of vowel phonemes with their own distinct sounds. I'll model each sound and the grapheme will be shown on the screen below. A, as in the first sound in apple. E, as in the first sound in elephants. I, as in the first sound in igloo. A, as in the first sound in octopus. As in the first sound in umbrella. A, as in the middle sound in rain. As in the final sound in saw. E, as in the final sound in tree. I, as in the middle sound in light. O, as in the middle sound in boat. U, as in the first sound in uniform. Oo, as in the middle sound in mood. As in the middle sound in book. Ow, as in the final sound in cow. Oi, as in the final sound in boy. There are also R-controlled vowels, such as R, as in the final sound in car. As in the middle sounds in heard, bird, and surf. Air, as in the final sound in chair. Ear, as in the final sound in spear. Or as in the middle sound in fork. Sometimes, when a vowel sound is located in the unstressed syllable of a word, it becomes a schwa. An example of this is the that you hear as in the first sound of the word again. Make sure that your students hear you model the correct consonant and vowel phonemes. This will help them produce the correct sounds themselves, and in turn, guide them as they learn to read and write. इसको 2 से 3 मरतबा आप और देख लीजिएगा। आप यकीन करें आपकी बेसिक की जो आईटी है ना, जो मुझे 6 महीने लगे थे सीखने में, आप लोग 6 मिनट में सीख रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ना, ऑनलाइन लर्निंग फास्टर है, ये हकीकत है। 6 महीने में सीखी थी मैंने ये साउंड, जो 6 मिनट से पहले आप लोगों ने सीखी, सुन ली, ठीक है ना। चलिए, अच्छा, जब ये आप कर ले तो फिर अब आपको जाना है बाकायदा तौर पर एक प्रोनाउंसिएशन कोर्स में। अब आप एक बाकायदा तौर पर एक प्रोनाउंसिएशन कोर्स करने जा रहे हैं, और छह घंटे का ये प्रोनाउंसिएशन कोर्स है, 6 आवर्स। आप देख सकते हैं, नीचे आवर्स लिखे हुए आ रहे थे। 6 आवर्स का प्रोनाउंसिएशन कोर्स। अगर आप रोजाना 1 घंटा निकाल लें इस कोर्स के लिए तो बड़ा अच्छा होगा। किसी भी टाइम पर आप इसको सुने। अच्छा देखिए, ये वही वर्ड्स हैं, ये वही वर्ड्स हैं जो अभी आपने इंडिविजुअली सुने हैं। मैं आपको जिस तरह से गाइड कर रहा हूँ ना बेटा, वो स्टेप्स फॉलो कीजिएगा। अगर स्टेप्स को फॉलो करेंगे आपको हर चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। आप बेसिक साउंड्स को सीख जाएंगे, फिर आपके लिए आपके जो प्रोनाउंसिएशंस की प्रॉब्लम है ना, वो बहुत जल्दी सॉल्व होगी। जब आप डिक्शनरी देखेंगे तो आप ये साउंड्स देखकर पहचान जाएंगे कि इस वर्ड को कैसे पढ़ा जाएगा। अब देखिए, ये बीच में लॉन्ग साउंड है, ऊपर शॉर्ट साउंड। तो अगर लॉन्ग साउंड है तो बीट, और शॉर्ट साउंड है तो बिट। तो इसको Bin, bean, bit, beat, bitch,
inch. Biz, beans. Blip, bleep. Chick, cheek. Chip, cheap. Chipped, cheat. Did, deed. Dip, deep. Fill, feel. Fist, कितने सारे वर्ड्स आपको देखे पढ़ के बता रही है। fit, Feet. cheat. Fizz, fizz. Gin, gene. Grid, greed. Grin, greed. Hid, heed. Hill, heel. Hip, heap. His, he's. Hit, heat. Ill, eel. Is, ease. It, eat. Itch, inch. Kid, heat. Kip, heap. Lit, neat. Lick, leak. Lip, अब ये देखिए lip. इसने सिर्फ आपको कौन से वर्ड की प्रैक्टिस करवाई है, ई और ई। अगर मैं थोड़ा सा इसको आगे शिफ्ट कर दूं, It, it. Hi, it's Escobar here, speech therapist and creator of Speak More Clear. It, 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 it. Let's now take the words bed and bid. Repeat after me. Bed, bed, bed. Bid, bid, bid. Bed, bid. अब मुझे बताइए इतने प्यार से आपको कभी किसी ने पढ़ाया है? बताइए। अगर 6 आवर्स का इसका ये कोर्स हम पूरा मुकम्मल कर ले तो ये जो एक एक साउंड है ये आपके जहन में ऐसे नक्श हो जाएगी कि आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। ठीक है, और जब आपके पास ये हो जाए तो फिर मैं आपको अब जो आइडियाज दे रहा हूँ फिर आप उसको फॉलो कीजिएगा। फिर आपके लिए पूरी दुनिया एक्सप्लोर करनी है आपको। ये आपको मैंने स्टेप 1 2 3 बता दिया, उससे पहले मैंने आपको एक पूरी 3000 वर्ड्स की वीडियो बता दी। इसके बाद फिर अब आपके पास क्या है, आइए बताता हूँ। Bed, bid, जब आप यहाँ पर bed, जब आप यहाँ लिखते हैं pronunciation, पैराग्राफ्स प्रैक्टिस, पूरे पैराग्राफ लेवल के ऊपर आपके पास प्रोनाउंसिएशन है। अब जैसे देखिए लिखा हुआ है रीडिंग प्रैक्टिस, रीडिंग इंप्रूव योर प्रोनाउंसिएशन। अब ये बाकायदा गोरे की आवाज में आपको पैसेज मिलेगा। अब ये देखिए बहुत सारे इस तरह के पैसेजेस अवेलेबल हैं। अब मैं इस पे एक प्ले करता हूँ और टी ऐड चलते हैं हर जगह। लिसन एंड प्रैक्टिस। जब आप लोग जब इस बेसिक सब कुछ कर ले फिर आप यहाँ पर कर सकते हैं। In many countries, the government helps to care for people. अच्छा, अभी अब आपको सुनना है, फिर उसके बाद आप में से किसी एक को इसको रीड करना है।
Everybody listen very carefully. More help is needed after an emergency, too. Volunteers give this help. Anyone can do voluntary work. Volunteers can be young or old. Many volunteers work with charities that help people all around the world. Some doctors and nurses fly thousands of kilometers to do voluntary work in another country. They work in hospitals or clinics for many weeks or months. They sometimes give vaccinations so that people do not get serious diseases. Every year in the USA, about 62 million people do voluntary work. About 8 Yes, Tabitha. Do you have a question? Yes. Tabitha. Any question or do you want to read? Sir, I want to read. पहले सुन ले एक दो और सुन ले 8 million volunteers or 16. In many countries, the government helps to care for people. Governments give money to workers like doctors and nurses. Sometimes, when there isn't enough money, more help is needed. More help is needed after an emergency, too. Volunteers give this help. Anyone can do voluntary work. Volunteers can be young or old. Many volunteers work with charities that help people all around the world. Some doctors and nurses fly thousands of kilometers to do voluntary work in another country. They work in hospitals or clinics for many weeks or months. They sometimes give vaccinations so that people do not get serious diseases. Every year in the USA, about 62 million people do voluntary work. About 8 million volunteers are 16 to 24 years old. Hi, it's Esther Brawl here, speech therapist and creator of Speak More Clearly. Yes, Tayyaba, read. Volunteers Read. Sabine. Athiya. जी सर Read. इस टॉपिक को रीड करने की बात कर रहे हैं जी अभी सुना है ना दो दफा इसको रीड करें जी 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 In many countries, the government helps to care for people. Governments give money to workers like doctors and nurses. Sometimes when there is not enough money, more help is needed. More help is needed after an emergency too. Give volunteer give this help. Anyone can do voluntary work. Volunteers can be young or old. Many volunteers work with charities that help people all around the world. Some doctors and nurses fly thousands of kilometers to do voluntary work in another country. They work in hospital or clinics for many weeks or months. They sometimes give vaccinations so that people do not get serious diseases. Every year in the USA, about 62 million people do voluntary work. About 8 million volunteers अच्छा अब इसकी जरा are सुनिएगा दोबारा इस खूबसूरत लड़की को सुनिएगा In many countries, the government कैसे बोलती है in many countries हर वर्ड के अंदर एक चीज होती है इंटोनेशंस मैंने क्या कहा
Intonations. कौन सा वर्ड कहा मैंने? It helps to care for people. Government Intonations. अब मैं आपको सिर्फ एक, अब देखो प्रोनाउंसिएशन के अंदर भी दुनिया है. Pronunciation with intonations, stress and rhyme. ये चीजें होती है जब आप बोल रहे होते हैं. ये देखिए, ये आपको intonation, rhyme और stress, ये आपको बहुत अच्छा बताएगा. कोई अपनी जानने वाली मिले, ये अच्छा बताते हैं. Hi, it's Esther क्या हो गया? Ball ये here, आंटी के ऐड चले जा रहे speech therapist and creator of Speak More Clearly. Hi, I'm Kai. Welcome to Oxford Online English. In this lesson, you can learn about intonation in English. How important is intonation? Let's see. Look at a sentence. Do you need some help? अच्छा, अब देखिए इसने इस सेंटेंस को बोला कैसे. इसने इस सेंटेंस के अंदर कोई इंटोनेशंस का इस्तेमाल नहीं किया. इंटोनेशंस का मतलब होता है आपकी आवाज में उतार चढ़ाव. अब आपने देखिए प्रोनाउंसिएशन, एक एक वर्ड को आप उसके सही प्रोनाउंसिएशन याद कर रहे हैं. प्रोनाउंसिएशन के बाद इंटोनेशंस पे काम करना पड़ता है. अब सुनिएगा इसको. It's a simple question. But by changing the intonation, you can change the meaning completely. For example, it can be a simple question where you're really offering to help. Do you need some help? It can be a rhetorical question where you don't really think the person needs help, but you want to be polite. Do you need some help? It can show that you're annoyed with the person you're talking to. Do you need some help? It can आपने देखा किस स्टाइल से उसने बोला है. be sarcastic. Do you need some help? It can show surprise that the other person might need your help. Do you need some help? There are other possibilities too. You can see that intonation is a very powerful tool. Controlling your intonation is important for communication in spoken English. So, let's start at the very beginning. What actually is intonation? Hi, it's Esther Grohl here, speech therapist and creator of Speak More Clearly. There are 7 possible intonation patterns in English. Rising, falling, rising, falling, falling, rising, flat, high, low. स्क्रीनशॉट ले लो इसका. These are the intonation patterns. बहुत अच्छी बात बताई उसने भी आपको कि हमारी आवाज में जब उतार चढ़ाव आता है तो वो क्या होता है. जब हम कोई सेंटेंस बोलते हैं तो वो किस स्टाइल से बोलते हैं. अभी देखिए ना, हमने एक पैराग्राफ को सुना, उसके बाद भी जब हमने एक लोकल स्पीकर को सुना तो मजा नहीं आ रहा. क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमारे पास इंटोनेशंस नहीं. The most important are the first 4, rising, falling, and combinations of rising and falling tones. Flat tones, including high and low tones, aren't common and don't have many uses, so we won't talk about them today. However, rising and falling tones can each have many different meanings. Keep this in mind. One intonation pattern does not mean one thing. The same intonation can have different meanings in different situations. Also, intonation is flexible. There are rules, but the rules are not 100% fixed. Different people speak in different styles. Let's practice. Here's a word. Let's try saying the word with different intonation patterns. Repeat after me. Rising. Where? बोले कैसे बोला इसने. और ये आपकी आवाज ऊपर की तरफ जाएगी. Rising. Where? Where? अब देखिए आप कैसे बोल रही हो. Falling. Where? Rising. Falling. Falling. अब
Where? Falling, rising. Where? कहाँ? Let's try one more. उर्दू बोल देना. कहाँ? Here. Where? आपको याद है आमिर खान का अच्छा? आमिर खान की फिल्म में आपको अच्छा याद है? बहुत अच्छी एग्जाम्पल वो कोट की थी आमिर खान ने कि अच्छा. अब आप देखिए अच्छा अच्छा. अब अगर मैंने सिर्फ ये कहा अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, मतलब आई एम नॉट सरप्राइज्ड. अच्छा, इट मींस आई एम सरप्राइज्ड. अब आई बात समझ के इंटोनेशंस हैव गिव अस डिफरेंट मीनिंग्स With two words. Absolutely. How many? Rising. How many? कितने? Falling. How many? कितने? Rising, falling. How many? कितने भाई? Falling, rising. How many? कितने? If you can pronounce these 4 intonation patterns, you can. तो आपको मैंने एक नई चीज से देखे आपको मैंने इंट्रोड्यूस करवाया, इंटोनेशंस. हाउ टू प्रैक्टिस योर इंटोनेशंस इन इंग्लिश. बहुत ये पूरी दुनिया है. आप सिर्फ YouTube पे इंटोनेशंस लिख दे, आप एक नई दुनिया में चले जाए. इंटोनेशन, स्ट्रेस एंड राइम. वक्त मिले तो इन तीनों चीजों को जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा. अब जैसे ये भी है, और गोरे को सुनिए. It's Escobar here, speech therapist and creator of Speak More Clearly. Hi, welcome to. सिर्फ गोरे को सुनिएगा, वो ज्यादा आपको अच्छा सिखा सकते हैं. इसके अलावा आपको कोई और नहीं सिखा सकता. अब ये देखिए क्या है. Google.com. I'm Adam. In today's video, I want to talk to you about word stress and intonation to help you with your listening, but also with your speaking of English in a more natural way. Okay, I'm going to start with an example to show you what I'm talking about. Tom asked Lisa out. Very simple sentence, but I want you to listen to the different ways I say it. Tom asked Lisa out. अच्छा अब देखिए, इसने कहा Tom asked Lisa out. इसका फोकस किसके ऊपर था? टॉम पर. मतलब टॉम ने कहा लीसा को बाहर जाने के लिए, एडम ने नहीं कहा. अगर मैं आपसे सिंपली एक सेंटेंस लिखूं, Ali asked me to leave out, to go out. Ali asked me to go out. It means not anyone else. अब देखिए वो भी शायद यही बात कहे. Tom asked Lisa out. Tom asked Lisa out. अब देखिए हर वर्ड को आप एक्सप्रेस करें तो आपकी सेंटेंस की मीनिंग बदल जाएगी. Tom asked Lisa out. Tom asked Lisa out. Tom asked Lisa out. Each way I said it has a slightly different meaning because I gave different stress to each word. If I say Tom asked Lisa out, it means not Frank, not Bill, not John. देखा आपने वही वाली बात की जो मैंने कहा, not Adams. Stressing Tom because that's who I want you to understand did this action. Tom asked Lisa out. Not Jane, not Kathy, not anybody else, right? So the word stress is actually very important, again, both in listening and speaking. तो बेटा ये word stress आपको इससे बताया, ठीक है ना? This is the word stress. Now I made a lesson about word stress a long time ago, one of my earliest lessons, but you can catch the description in the link in the description box. And Emma also made a very good video about word stress, so I highly recommend you watch those and keep those in mind with what I'm going to talk to you about here. Now, what I have here are poems, essentially. This one is a nursery rhyme. And this one is rap. Okay. Both of these are very good ways to practice. तो बेटा ये आपको like these are some videos which I have shared with you.
आप इसमें बहुत सारे आपको और अच्छे अच्छे वीडियोस मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पे भी सिलेबल एंड वर्ड स्ट्रेस, मुझे ये 1 hour स्पीक लाइक नेटिव स्पीकर, ठीक है ना, वॉच देखिए, बहुत अच्छा, ये भी बहुत अच्छी वीडियोस बना Hi, दी है। it's Esther ये तो ये Gurulke, आंटी बार बार आ जा रही speech है। therapist and creator of Speak More. Want to speak real ये देखिए, ये बहुत English अच्छे from your वीडियोस first lesson? Sign up for your free lifetime account at English Class 101. Subtitles can be very beneficial. शी इज अ वेरी गुड टीचर, लाइक आप इसके रेफरेंस मैंने आपको दे दिए, एंड ये आपको गाइड कर रही है कि हाउ यू कैन स्पीक इंग्लिश। तो कुछ आज आपसे मैंने वीडियो शेयर किए ना, दे आर वेरी फ्रूटफुल। सबसे पहले क्या करेंगे, वो जो 3000 कीवर्ड्स है वहां से स्टार्ट लीजिए। फिर जो मैंने आज आपसे 4 स्टेप 1 2 3 मैंने आपको सिखाया, मैं आपको उसके लिंक्स फॉरवर्ड कर दूंगा मिस मरियम की क्लास के बाद, सो यू कैन वॉच देम एंड देन यू कैन मेक द मोस्ट ऑफ देम। किसी का कोई सवाल है तो पूछिए। तो कल की क्लास का टॉपिक क्या है? कल की क्लास का टॉपिक होगा सिंटेक्स। कल हम पढ़ेंगे अल्फाजों की तरतीब। आपके पास एक हफ्ता है, ये जितने भी मैंने आपसे अभी चीजें शेयर की इनको गो थ्रू करें। देखिए, हमें भी एक प्लेटफॉर्म मिला था बेटा, व्हेन वी वर स्टूडेंट्स, हमें एक प्लेटफॉर्म मिला और हमने उनमें चीजों को सीखा। आज मैंने आपसे मैंने कहा जब प्रोनाउंसिएशंस की बात आती है, you have to improve your intonations, you have to improve your stress, you have to improve your rhyme patterns, you have to improve all these things, then you will become an outstanding speaker of English language. बात समझ आई? If you understand, say understand, and if you don't understand, say don't understand. But if you understand and say don't understand, how will I understand that you understand? 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 Yes, sir. Any question? किसी का कोई सवाल? सब सो गए? That's very good. Not sir.